How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. Okay, now look at this students' occupation. Now tell me, what do you understand by this word? There are many different ways in which people earn their living. Occupation क्या होता है? Business होता है एक. Okay. So there are many different ways in which people earn their living. Next students, today we are going to start at block 7 and this is the part 1 of your block. Now students, today let's find out how someone earns his living from growing crops. So today your topic is importance of growing crops. Now student, look at a story. This is a story. Let's read. Raghu is a farmer. He grows crops in his field. He grows some fruits and vegetables as well. He plugs the land, sows seeds, waters the field and reaps the harvest. He mostly uses blocks to plug the land. At times he borrows a tractor from his friend for plugging. He works every day even if it is too hot, too cold or raining. He waters the field using rainwater or gets water from wells, canals and tubewells. Too much water or too little water can harm his crops. जब हम अब क्रॉप्स में ज़्यादा वाटर डाल देंगे और या फिर कम वाटर होगा तो क्या हो जाएंगी, क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी. वो हार्म करेगा वो वाटर क्रॉप्स के अंदर. ही डज नॉट हैव एनफ मनी, हैंस ही हैज़ टू borrow money to buy seeds. He sells his crops in the market and earns money. We buy these crops for food. क्रॉप्स किसके लिए यूज़ करते हैं? फूड के लिए. लाइक राइस, वीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना. नाउ स्टूडेंट टेल मी, व्हाट डज रघु डू? व्हाट डज ही ग्रो? व्हाट डज ही यूज इन हिज वर्क? Does he face any problem in his work? And last one is, what are those? Now student, let's discuss the answers. Raghu is a farmer. He grows fruits, vegetables, pulses and grains. He works hard to grow crops even if it is too hot or too cold or rains. जब रेन थी तब भी करता था ना वो वर्क. Does he face any problem in his work? Yes. What are those? These are the problems. Too much water or too less water can harm his crops. He needs to take care of his cows. He does not have money to buy a tractor. ट्रैक्टर में यहाँ पे सिंगल टी आएगा. Even though he works so hard. So students, answer are clear to you. Move on next. Now student, tell me, what do farmers do? What do farmers do? How does farming help farmers? Next one, how does farming crops help us? And what will happen crops? What will happen if farmers cannot have a good harvest? Now let's discuss. So students, farmer grow crops, pulses, fruits and vegetables.
There are these are sold in the market. क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, उनको कहाँ सेल करेगा वो? मार्केट में. और फिर मार्केट में सेल करने के बाद क्या करेगा? फार्मर्स earn their selling what they grow. We in turn depend on the farmer for food. If the farmer is unable to have a good harvest, he won't be able to earn money. अगर उसके पास अच्छी से फसल नहीं होगी उसकी, तो वो मनी भी नहीं अर्न कर पाएगा ना. So students, he has to depend on rain to have a good harvest. उसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? रेन पे भी डिपेंड होता है ना कई बार. रेन अच्छी होगी तो फसल भी आपकी जो क्रॉप है वो भी अच्छी होगी. Now student, it is clear to you? Move on next. Where it is not possible, where is it not possible to grow crops? कहाँ पे हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे? In places that do not have large open fields, has dry and इनफर्टाइल सोयल. इनफर्टाइल क्या होता है? अनुपजाऊ भूमि, जहाँ पे मतलब जो बंजर होती है ना, वहाँ नहीं उगा पाएंगे हम क्रॉप्स को. सो स्टूडेंट्स, आंसर इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. Today your topic is importance of growing crops. Where does the roti or bread that you eat come from? Think about it. It comes from wheat, which is made into flour. है ना? The flour is made into roti or bread. वीट से क्या बनेगा? फ्लोर. और फ्लोर से क्या बनेगी? रोटी बनेगी और ब्रेड बनने वाला है. डू यू नो वेयर दिस वीट कम्स फ्रॉम? डू यू नो? यस, इट कम्स फ्रॉम फील्ड्स. Farmers grow it in fields. Most farmers live in villages because villages have large open fields where farming is possible. विलेजेस में लार्ज ओपन स्पेस होता है फील्ड्स के लिए, सो वहाँ पे क्या है? फार्मिंग पॉसिबल है. Farmers grow different types of crops such as rice, wheat, cotton, jute, fruit and vegetables. They plough the land, sow seeds and take care of the crop till it is ready for harvest. वो जब तक करते रहते हैं सीड्स को, सो टेक केयर करते हैं क्रॉप्स की, जब तक वो कटाई के लिए रेडी नहीं हो जाती, कटने के लिए. आफ्टर द क्रॉप is harvested, it is sent to the mills. फिर फसल को कहाँ भेजते हैं? कटने के बाद, कटाई के बाद मिल्स में भेजते हैं. From the mills it goes to the shops from where we buy food grains. फिर मिल से कहाँ पे आएगी वो? शॉप्स पे. और शॉप्स पे से हम कौन परचेज करेगा उनको? हम ग्रेन्स के फूड ग्रेन परचेज कर लेते हैं. पल्सेस होती हैं वो हमें मार्केट में शॉप से मिल जाती हैं, वो ले लेते हैं. So the work of a farmer is very important because if he did not grow crops, we would not get crops, fruits and vegetables to eat. We would not even have clothes made of cotton to wear. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो भी कहाँ से आते हैं? क्रॉप से ही आते हैं. कॉटन प्लांट्स होते हैं, उनको मिल्स में बेचते हैं. मिल के बाद वो क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हम उसको स्टिच करवा के वेयर करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर रीडिंग लेसन 1. नाउ स्टूडेंट, लेट डिस्कस आवर वर्कशीट. दिस इज़ योर वर्कशीट. दिस इज़ द क्वेश्चन 1. रीड द पैसेज, अंडरलाइन द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम अ फार्मर. आपको इस पैसेज को रीड करना है और क्या करना है आपको? अंडरलाइन थिंग्स को अंडरलाइन करना है जो आपको फार्मर से मिलेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल,
अब यहाँ पे देखो रोटी दिया हुआ है ना, रोटीज़ हैं, दाल है, राइस है, वेजिटेबल, ये कहाँ से मिलेंगे आपको? फार्मर देगा ना। तो आपको जो जो थिंग्स हैं, underline that things that we get from a farmer. Now this is question 2. Give 3 reasons why growing crops is an important occupation. So you have to write down the 3 reasons why growing crops is an important. Without crops we don't get food. Without crops we don't get cotton clothes, है ना? So there are write 3 reasons. Think about the reasons and write 3 reasons in your question 2. And this is question 3. Write about one problem that a farmer faces. आपको one problem write करनी है जो farmer face करते हैं. Which problem they face? आपको स्टोरी में देखा था ना, रघु वाली जो स्टोरी थी उसमें रीडिंग किया था आपने. Too much water or too less water harm our crops, harm his crops. So you have to think about one problem that a farmer faces and write down your answers. So this is your question. This is your worksheet. Now let's move on the practice questions. You have to do the practice question 5th. Describe the work of a farmer. You have to write down, you have to describe the work of a farmer. Farmer का क्या work है? A farmer grows crops like pulses, grains, fruits and vegetable. So you have to think about this question. You have to think about the answer of this question and you have to write down in your SS notebook. So this is your question 5. Now students, thank you for watching this video. Watch it carefully.